हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कोर 7 जो थर्ड सेमिस्टर पिला रही एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स से पेपर करुली ओडिया मीडियम क्लास करुली। तेणु केते पिला कमेंट देते मैडम टी इंग्लिश मीडियम रे करंतु। तेणु आज इंग्लिश मीडियम आरंभ यूनिट 1 फास्ट टॉपिक जे मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलो डिस्कशन करवा व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तेणु प्रथम क्वेश्चन हूँ कौन ना व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, डिस्कस इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस। तार आंसर केमिति लिखिबो। प्रथम क्वेश्चन आसला कौन ना व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, डिस्कस इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, डिस्कस इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस। तार आंसर आछे कौन ना विथ द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी nowadays statistics has become indispensable in almost all the fields of knowledge and human activities। कहले कौन ना जो साइंस एवं टेक्नोलोजी जो एडवांसमेंट रही द्रुत गति रे तार जो व्यवहार रही nowadays statistics has become indispensable। कहले समस्त स्टैटिस्टिक्स कौन रही नेसेसरी रही almost all the fields of knowledge and human activities as well as its use in teaching learning situations has also increased। कहले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बा शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया यार व्यवहार बहुत बढ़ी जाइए। देयरफॉर विदाउट द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स ए टीचर इज हैंडिकैप्ड। कहले कौन ना गोटे टीचर मस्ट नो द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तापर कौन देखा ना in 1794 Gottfried Eichenwald, a professor of Marlborough, made use of the word statistics for this subject। The word statistics has been derived from the Latin word status। कौथुरासी ना प्रथमे गॉटफ्रीड एचेनवाल स्टैटिस्टिक्स शब्द को व्यवहार करते से जड़े प्रोफेसर। तेणु दि वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टैटस। कौथुरासी ना लैटिन वर्ड स्टैटस और दि वर्ड स्टैटिस्टा माने स्टैटिस्टा रु मध्य आसी ऑफ द इटालियन लैंग्वेज। स्टैटिस्टाटा होला कौन ना इटालियन लैंग्वेज एवं लैटिन वर्ड है कि ना स्टैटस है लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स ऑफ द इटालियन लैंग्वेज। बोथ दिज वर्ड्स मीन पॉलिटिकल स्टैटस। दुईटा जाक शब्दर अर्थ है कौन ना पॉलिटिकल स्टैटस बा राजनैतिक व्याख्या। दस in old times the word statistics meant the political situation of the state। बुझी पाइल तेले स्टैटिस्टिक्स मीनिंग कौन। तापर नेक्स्ट आस देखा कौन सार रोनाल्ड ए फिशर बा आर ए फिशर फर्स्ट अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन द डाइवर्सिफाइड स्पीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ सच एज सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस एंड अदर्स एंड reconciliated all the branches with pioneering new dimensions to the subject। he is known as the father of statistics। ताले फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किए ले ना सार आर ए फिशर बा रोनाल्ड ए फिशर। हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स तुम मध्य सर्ट क्वेश्चन आसीपारे पिला माने। तेणु आर ए फिशर हेले फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तापर केते गुडे डेफिनेशन देखिबा स डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस हैव डिफाइंड स्टैटिस्टिक्स एज फॉलोज। डेफिनेशन गुडा देखा पिला माने लॉन्ग मैन डिक्शनरी प्रथम से कहले ना स्टैटिस्टिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स व्हिच रिप्रेजेंट फैक्ट्स और मेजरमेंट। स्टैटिस्टिक्स कहले कौन ना स्टैटिस्टिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स विदाउट नंबर स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी पॉसिबल। तेणु स्टैटिस्टिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स व्हिच रिप्रेजेंट फैक्ट्स और मेजरमेंट। तापर देखिबा कौन ना ए एल बाउली कौन कहले ना स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। कहले किसी रिलेशन रही था स्टैटिस्टिक्स जो डाटा आम पाऊे खोजुकी करुचे तार किसी रिलेशन रही था। तापर आसला कौन ना बोर्डिंगटन। बोर्डिंगटन क्या कहले ना स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। एस्टिमेट कहले जो आम कौन करुचे एस्टिमेशन एंड प्रोबेबिलिटी कहले आम जो संभाव्यता नौचे आउ एस्टिमेट करुचे जे अनुकूलन करुचे जे केते दूर ये जो शिक्षा क्षेत्र में व्यवहार करते स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज कहले एस्टिमेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तापर 10 स्टैटिस्टिक्स इज ये जो डेफिनेशन गुड़ाक आम कौन पाइले ना स्टैटिस्टिक्स इज न्यूमेरिकल फैक्ट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड एन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। सेकेंड पॉइंट होची ना फैक्ट्स आर होमोजेनस एंड रिलेटेड टू ईच अदर।
थर्ड पॉइंट होची फैक्ट्स मस्ट बी एक्यूरेट फोर्थ पॉइंट होची इट मस्ट बी कलेक्टेड सिस्टमेटिकली ताले जो डाटा सब कलेक्ट करा जाउची बा न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करा जाउची सेगुड़िक सिस्टमेटिकली कलेक्ट करा जाए तापर नेक्स्ट आस देखा कौन नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हाट आर द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज फर्स्ट पॉइंट कौन ना statistics are concerned with the collection of facts or aggregate of facts rather than quite a single fact or figure कहले statistics जाउची कहा संगे concern बा कहा रिलेटेड ना कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कहले विभिन्न फैक्ट को नहीं एटा स्टैटिस्टिक्स होची कंसर्न किंतु सिंगल फैक्ट बा सिंगल फिगर रे ये हुए नाही तापर सेकंड पॉइंट होची कोन ना statistics are affected to a marked extent by multiplicity of causes तापर नेक्स्ट पॉइंट होची कोन ना डाटा कलेक्टेड इन ए haphazard manner would lead to false concession therefore data should be collected in a systematic manner तेणु डाटाटा गोटे सिस्टमेटिक मैनर रे कलेक्शन करा जिबा उचित तापर नेक्स्ट पॉइंट होची अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स डाटा कैन बी एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी तापर नेक्स्ट पॉइंट होची all statistics are expressed in numerical number that is expressed in numbers and related to quantitative information only next point होची without any objective collected data will be useless without any objective collected data will be useless जदि objective नहीं ताले data collection useless thus the purpose of collecting data must be decided in advance तापर next point होची the data must be placed in relation to each other in the absence of such a quality statistics would serve no purpose तापर next देखिबा कोन ना importance or use of statistics importance by use of statistics and the answer लिखिबा the importance or uses of educational statistics are as follows प्रथम पॉइंट होचे ना statistics for the teacher statistics केमिति गोटे टीचर पई गुरुत्वपूर्ण बा दरकारी तार डिस्क्राइब केमिति करबो ना द साइंटिफिक मूवमेंट इज इन एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम द टीचर इज टू प्ले ए डेफिनेट रोल in the development of this program. He is to conduct research connected with the classroom, with the students and with the school. It is his duty to study character, ability, health and interest of the pupils. He cannot do this without the knowledge of statistics. तेणु ये जो काम गुड़िक सब रहा statistics knowledge रही गोटे शिक्षक भल भाव में कर The teacher uses the different kinds of educational and psychological tests for evaluation of the development of the pupils. The construction of these test interpretation of results and need a teacher who is statistical minded. कहले जो टेस्ट गोटे कंस्ट्रक्शन करवा ताको इंटरप्रिटेशन करवा रिजल्ट बाहर करवा सब दरकार होची कार ना गोटे टीचर जदि स्टैटिस्टिकल नॉलेज रही थिबो तापर सेकंड पॉइंट होची इंपोर्टेंस फॉर द स्टूडेंट पई कोन इंपोर्टेंस रही बा गुरुत्व रही Importance of statistics for the student is that it gives a clear view of the interest and abilities of the students and thus helps in knowing the individual differences among the students. With this, the students can be guided in the choice of their educational and professional career. तो पिला मानको बुझिबारे मध्ये एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स रा आवश्यकता रही तापर नेक्स्ट पॉइंट होची कोन ना इंपोर्टेंस फॉर इवैल्यूएशन कहले जो आमे मूल्यांकन करूचे Statistics is used in the evaluation of the results of various tests such as intelligence test, achievement test and diagnostic tests. तापर देखो पिला माने नेक्स्ट पॉइंट होची कोन ना इंपोर्टेंस फॉर स्कूल पई मध्ये ओटे स्टैटिस्टिक्स रा आवश्यकता रही छि स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन द बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ स्कूल इन वेरियस सेट्स ऑफ एक्टिविटीज इन वेरियस स्कूल एक्टिविटीज कहले अचीवमेंट टेस्ट कर जो करा जाउची एवं पिला मानकर एक्सप्लेनेशन बेटर एक्सप्लेनेशन करिया पई अचीवमेंट ऊपर विभिन्न स्कूल गुडी करे स्टैटिस्टिक्स रा आवश्यकता रही तापर नेक्स्ट पॉइंट होची इंपोर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज कहले एजुकेशनल रिसर्च एवं एजुकेशनल एक्टिविटीज पई स्टैटिस्टिक्स रा आवश्यकता रही नॉलेज ऑफ मैन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट अंडर द इफेक्ट्स ऑफ दिस फास्ट इंक्रीजिंग नॉलेज एजुकेशन इज टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस
For this, various experiments are to be conducted and research is to be done, the results of which are better explained and analyzed with the help of statistics. ଯେତେ ଯାକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ନା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ମେଥଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରେକର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ। Statistical methods are used on keeping the records of educational institutions in respect of examinations, number of students, examination results, income and expenditure of the school or of the institution, etc. तापर next point होची कोना guidance. Statistical methods are used in educational and vocational guidance programs. तापर गोटे conclusion लिखिबो कोना thus statistics is very important and necessary in the teaching learning process. It is used to measure the entry performance of the students and to evaluate the performance at the end. ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପିଂ ଅଫ୍ ଡାଟା। କହିଲେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଏବଂ ତାର କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ ରହିଛି ଡାଟା ଗ୍ରୁପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ମେକ୍ ଡାଟା କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟସ୍ meaningful, they must be arranged and classified systematically. Therefore, we have to organize the data into groups or classes on the basis of certain characteristics. These principles of classifying data into groups is called frequency distribution. In this process, we combine the scores into relatively small number of class intervals and then indicate a number of cases in each class. Below are given the steps of grouping the data into frequency distribution. केमिति को स्टेप को आम अनुसरण कले कौन कर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन रे डाटा को रिप्रेजेंट करि परिबा। ताले फर्स्ट स्टेप होछि कोन ना डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस कहले केतेटा क्लास इंटरवल करिवो नंबर ऑफ क्लासेस कहले क्लास इंटरवल। तापर सेकंड स्टेप होछि कोन डिटरमाइन द रेंज दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर इन द डाटा। रेंज केमिति बाहर करा जाए ना r इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। तापर थर्ड पॉइंट होछि कोन डिवाइड रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस टू एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द इंटरवल। तो का कर डिवाइड रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस रेंज जति मारिबो ताको डिवाइड करबो का नंबर ऑफ क्लास इंटरवल रे। फाइंड नेक्स्ट स्टेप होछि फाइंड आउट द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द lowest class and it add to it the class interval to get the upper class interval. तेणु जोटा आम पाइबा साइज ऑफ द क्लास इंटरवल प्रथम लोअर लिमिट आम आरंभ कले अपर लिमिट मध्य ताको कौन कर परिबा ऐड कले आम लोअर अपर एंड एवं लोअर एंड पाई परिबा। धरा जाओ आमर साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है 5 तेणु आम जदि 40 ରୁ 44 करवा ताले एपटे 5 ऐड करवा एपटे 5 ऐड करवा कोडी 40 रे 5 ऐड करवा एवं 44 रे 5 ऐड करवा। तापर नेक्स्ट केते हबो ना 45 तापर नेक्स्ट क्लास इंटरवल केते अपर लिमिट हबो केते ना 49 बुझि पाइला पिला माने आको 40 रे 5 ऐड करेला 45 एवं 44 रे 5 ऐड कले 49 तापर पुणी 45 रे 5 ऐड कले केते हबो 50 एवं एटा हबो केते आधे 49 रे 5 ऐड कले केते हबो 54 बुझि पालो। तेणु एपटे 5 ऐड हबो एवं एपटे 5 ऐड हबो बुझि पालो पिला माने एही भाबरे क्लास इंटरवल गुडी को करा जाय। ऑब्टेन क्लास लिमिट्स फॉर द remaining classes by adding the class intervals to the limits of the previous class. तापर नेक्स्ट स्टेप हो ना the scores given in the data are taken one by one and are allotted places in the respective group to which they belong. This is done by tally marks जो frequency distribution रे जो tally mark देकरी पिला माने बुझैतिली ए जो मार्क को हम tally बोली कहि थाउ। tally mark द्वारा ताको प्लॉट करा जाय। The tally marks are then counted and converted into figures which are noted against each step
intervals. These counted numbers are called the frequencies of that class. तापर नेक्स्ट स्टेप होची कौन द टोटल फ्रिक्वेंसी शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हुज स्कोर्स हैव बीन टैबुलेटेड जेतेटा आम स्कोर नहीं पिलांकर तेणु एन इज इक्वल टू सेतिक हवा आवश्यक फॉर एग्जांपल देखो गोटे एग्जांपल नवा फॉर एग्जांपल बिलो आर गिविंग द स्कोर्स ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तेणु ये दी थर पे डिस्ट्रीब्यूशन रही गोटे डिस्ट्रीब्यूशन को काटिदेव तेणु केमी स्कोर नि ना ये नि स्कोर नि प्रथम कौन कर मिड पॉइंट बाहर कर दि मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इज कैलकुलेटेड बाय एवरेजिंग द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स एज फॉलोज मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल केमती लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाय 2 तापर देखो सॉल्यूशन ऑफ द एबव गिवन डाटा प्रथम कौन करना फ्रॉम द एबव स्कोर इट इज pertinent that the sample size is 70 or n is equal to 70 ताले ठीक केतेटा निया जायछि ना 70 जन पिलांकर कोन निया जायछि स्कोर निया जायछि 70 जन पिलांकर स्कोर निया जायछि तापर कोन करबो ना तापरे here the highest score is 71 and the lowest score is 51 तेणु हाईएस्ट स्कोर होछि केते ना 71 एवं लोएस्ट स्कोर होछि केते हाईएस्ट स्कोर एठी होछि 71 एवं लोएस्ट स्कोर होछि 51 तापर कोन करबो ना साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 3 और I इज इक्वल टू 3 आमे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल केते नौचे ना 3 नौचे बा साइज ऑफ द क्लास इंटरवल को I रे रिप्रेजेंट करा जाय तापर नंबर ऑफ क्लासेस विल बी 21 ए जो रेंज हैला केते ना हाई स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर हैला रेंज बाहरी गला तापरे 21 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7 और k इज इक्वल टू 7 के कहले कौन ना जो क्लास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल आम नवा तेणु यही भाव में आमको कौन करने पड़ो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल एवं साइज ऑफ द क्लास इंटरवल बाहर करने पड़ो तापर कौन करवा ना वी कैन टैबुलेट द एबव स्कोर्स इन द फॉलोइंग मैनर केमिति करिवो ना टैबुलेट करिवो तेणु प्रथम लिखिला कौन ना क्लास इंटरवल्स तापर मिड पॉइंट्स तापर टालीज एवं फ्रिक्वेंसीज केमिति करिवो ना प्रथम हमर लोएस्ट स्कोर हेतिला केते ना 51 हाईएस्ट स्कोर हेतिला 71 तेणु प्रथम जेतले क्लास इंटरवल प्लॉट करिवो तेणु प्रथम कौन करिवो ना लोएस्ट क्लास इंटरवल जेमती फर्स्ट क्लास इंटरवल इनक्लूड होतिबो एवं लास्ट बा हाईएस्ट क्लास इंटरवल रे हाईएस्ट स्कोरटा इनक्लूड होतिबो तेणु ट्रू लिमिट्स तार नहीं ट्रू लिमिट्स कहले एपटे -0.5 माइनस हबो एवं 0.5 एपटे माइनस हबो एपटे 0.5 प्लस हबो कहले लोअर लिमिट रे 0.5 माइनस हबो अपर लिमिट रे 0.5 प्लस हले तार ट्रू लिमिट्स बाहरबा एग्जैक्ट लिमिट आसी थाए तापर x कहले दीटा जाक मिसई की 51 प्लस 53 बाय 2 कले हमर मिड पॉइंट आसी थाए तापर टाली नवा जे 51 रु 53 भितर केतेटा स्कोर रही छी ताको केमिति करा जिवो ना 51 रु 53 भितर एमती गोटे गोटे टाली केमिति करा जिवो ना एठी गोटे स्कोर प्रथमे काटिबो तापर नबो टाली सही अनुसार मारिबो एठी 68 टा को क्लास इंटरवल आसीबो कोथरे आसीबो ना 66 टू 68 तेणु प्रथम ये गोटे टाली एमती दब तेणु गोटे गोटे स्कोर से काटिकी ये गोटे गोटे टाली दब एवं सरीगला कौन कर सरीगला कौन कर ना यहाँ काउंट हो ये जो गुड़ टाली आम पाईगले एगुड़ा सब काउंट कर ये 4टा गार अच्छी माने 4टा टाली अच्छी माने ये होला 4 4टा होगला जो बंका गारटा मर जाए आम काउंट करने सुविधा हुए तेणु यहाँ गणा 5 5 प्लस 2 7 5 यहाँ 5 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 कहले 5 5 10 2 12 यहाँ हूँ क्या 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 के 5 5 25 यहाँ हूँ 5 प्लस 5 प्लस 3 5 5 10 प्लस 3 हेल्ले 13 5 प्लस 1 हेल्ले 6 यहाँ 3 तेणु नंबर एन है ना एन है 70 तेणु आम जिते जन पिलांकर नहीं स्कोर सेते हम आमर एन होती बुझिपाला एन स्टैंड्स फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इन द डाटा जो आम डाटा नहीं जीटा स्कोर आम नहीं से आम एन बोली कहू तापर पिला माने देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही ना व्हाट इज हिस्टोग्राम डिस्कस द स्टेप्स ऑफ
प्रिपेयरिंग द हिस्टोग्राम केमिति गोटे हिस्टोग्राम प्रिपेयर करा जाए ताहले चलो देखिबा तार केमिति लिखा जिवो ना हिस्टोग्राम इज ए नॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ it is drawn on a natural scale in which the representative frequencies vertical rectangles drawn representative frequencies of the different class of values are represented through vertical rectangles drawn close to each other. Measure of central tendency mode can be easily determined with the help of this graph. It is otherwise known as bar graph or column diagram. आपको कौन कह जाए ना बार ग्राफ कह जाए बा कॉलम डायग्राम मध्य कह जाए तार स्टेप्स कौन रही ना हाउ टू ड्र कौन ए हिस्टोग्राम कहले एटा एडा कौन ना स्टेप्स ऑफ ड्राइंग ए हिस्टोग्राम प्रथम स्टेप हो कौन the scores in the form of actual class limits are taken in the construction of a histogram. तापर सेकंड पॉइंट हो it is necessary to take two extra intervals one below and other above the given grouped intervals or classes with zero frequency. आमर जेतिकटा क्लास इंटरवल थिबो जीरो फ्रीक्वेंसी आमर लोअर एंड रे एवं अपर एंड रे जीरो फ्रीक्वेंसी ने दीटा क्लास इंटरवल हमको एक्सटेंड करिया पई पड़िबो तापर नेक्स्ट होची एक्चुअल लोअर लिमिट्स आर टेकन विथ एक्स्ट्रा लिमिट्स एंड लोएस्ट इन and they are plotted on x axis. The lower limit of the lowest interval, one of the extra intervals, is taken at the interesting point of x axis and y axis. तब नेक्स्ट पॉइंट होची फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर प्लॉटेड ऑन y axis. तेणु x axis रे गला कोन नाम इंटरवल गुडिक गला बा लोअर लिमिट गला एवं x y axis रे कोन रहबो ना फ्रीक्वेंसी रहबो तब नेक्स्ट होची ईच क्लास और इंटरवल विथ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेपरेट रेक्टेंगल. The base of each rectangle is the width of the class interval size and the highest is the representative frequency of that class interval. तब नेक्स्ट होची कोन ना it is necessary to point the sides of the rectangles down to the baseline. तब नेक्स्ट पॉइंट होची प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट यूनिट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन along the x axis and y axis. तब केमि देखो गोटे एग्जांपल नवा जे प्रॉब्लम ऑफ हिस्टोग्राम केमिति हिस्टोग्राम ना एमती क्लास इंटरवल गुडी एमि दिया जाइछि एवं फ्रीक्वेंसी गुडी एमि दिया छै n = 50 कोन करबा ना केमिति नबा ना प्रथम होछि ना वी कैन टैबुलेट द डाटा इन द फॉलोइंग मैनर टू फैसिलिटेट आवर कैलकुलेशन केमिति करबा ना स्कोर्स गुडी नेलो बा क्लास इंटरवल गुडी नेलो तापर एक्चुअल लिमिट बाहरला एवं तापर फ्रीक्वेंसी मध्य आसिला स्कोर्स एक्चुअल लिमिट्स एवं फ्रीक्वेंसी बुझि पाइलो तापर कोन करा जिवो ना ताको प्लॉट करबो जो स्टेप अनुसार ताको प्लॉट करबो एक्चुअल लिमिट गुडी नै गलो एपटरे तापर बा एपटे कोन नै परिबो जो कोन मिड पॉइंट नै परिबो बा एक्चुअल लिमिट नै परिबो तेणु लिमिट नहीं कि जीरो करके गोटे गोटे क्लास इंटरवल बढ़ा जाइथिबो तेणु एपटे नेले आमे कोन नेले मिड पॉइंट नेले एपटे नेले फ्रीक्वेंसी तेणु जो अनुसार आमे नउचे ताको फ्रीक्वेंसी जो क्लास इंटरवल जेति गइतो सही अनुसार प्लॉट करके डॉट करके ताको कोन करा जिवो जॉइंट करा जाय बा जॉइन करा जाय तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बुझि पाले पिला माने व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हाउ कैन वी ड्रॉ इट गिव एन एग्जांपल कहले केमिति आमे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहले कोन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को आमे केमिति ड्रॉ करिता व्हाट आर द स्टेप्स टू ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. The answer होची the frequency polygon is a frequency graph which is drawn by joining the coordinating points of the mid values of the class intervals and their corresponding frequencies. It is just like a line graph for graphical representation of the frequency distribution. We can also get a frequency polygon from a histogram if the midpoints of the upper bases of the rectangles are connected by straight lines, but it is not necessary to plot a histogram first to draw a frequency polygon. We can construct frequency polygon directly from frequency distribution. The following points are to be kept in mind before constructing a frequency polygon. Frequency polygon करिया पे कौन सब steps दरकार होता है ना प्रथम होची like a histogram two extra intervals or classes one above and the other below the given intervals are taken कहले गोटे क्लास इंटरवल बढ़ेबा को पड़िबो गोटे बिलो रे एवं गोटे एबव रे
तापर नेक्स्ट पॉइंट होची कोन ना मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल क्लासेस और इंटरवल्स आर कैलकुलेटेड मिड पॉइंट बाहर करिया पई पड़िबो। थर्ड पॉइंट होची कोन द मिड पॉइंट्स आर मार्क्ड एलोंग द एक्स एक्सिस कहले मिड पॉइंट ए एक्स एक्सिस रे डॉट करिया पई पड़िबो बा मार्क करिया पई पड़िबो एंड द करेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड एलोंग द वाई एक्सिस रे कोन करा जिवो फ्रीक्वेंसी गुडी को प्लॉट करिया को पड़िबो by choosing suitable scales on both the axes. तापर कौन करना points obtained by plotting the midpoints and frequencies are joined by straight lines to give the frequency polygon. It must be remembered that a polygon is a many-sided figure. It is a closed curve. In comparison to the histogram, frequency polygon gives a much better conception of the contours of the distribution, centers of the distribution. तापरे केमिति करे ना प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्कोर सेम दिया जाइछि फ्रीक्वेंसी दिया जाइछि ता कोन करे इन द पॉलीगॉन वी हैव टू प्लॉट मिड पॉइंट्स इन द ग्राफ इंस्टेड ऑफ एक्चुअल लिमिट्स मिड पॉइंट को नबो ना एक्स एक्सिस रे मिड पॉइंट्स नबो ना वी कैन राइट द डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉलोइंग मैनर टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन केमिति करबो ना मिड पॉइंट कैलकुलेशन करिया पई पड़िबो आमे ने गले क्लास इंटरवल नेले मिड पॉइंट नेले एवं फ्रीक्वेंसी नेले तेणु कौन करेंगे ना फ्रीक्वेंसी हूँ टोटाल 50 ना वी कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉलोइंग द जनरल रूल्स ऑफ द ग्राफ रो जहाँ रूल अच्छी से करके करिवो स्कोर्स इन फॉर्म ऑफ मिड पॉइंट्स एठी कौन कल ना एक्स एक्सिस रे कौन नेल एक्स एक्सिस रे नेले आमे मिड पॉइंट नेले एगुड़ा सब होची कौन ना मिड पॉइंट एगुड़ा मिड पॉइंट एवं वाई एक्सिस रे नेले कौन ना फ्रीक्वेंसी नेले वाई एक्सिस रे फ्रीक्वेंसी नेले जो मिड पॉइंट बा जो क्लास इंटरवल जेते की फ्रीक्वेंसी सही अनुसार प्लॉट करी जीवा एठी जीरो कहीं जे ना आमे गोटे बढ़ाउछे जीरो फ्रीक्वेंसी नै क्लास इंटरवल गोटे बढ़ाउछे तेणु एठी हला जीरो जीरो जेहेतु होइछे हमको टच करिया पई बेस लाइन को टच करिया पई आमे जीरो नै थाए तेणु एई भली करा जाउछि कोन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बुझि पाले पिला माने प्रत्येक फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल एगेन्स्ट रे आमे फ्रीक्वेंसी को कौन करबा डॉट करी जीवा एठी गोटे एमती सब डॉट करी जाई ताको जॉइन करले आमे कोन पाइबा एगा होचे कोन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एई भली चित्रटी हेई थाए तापरे पिला माने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज ए पाई चार्ट हाउ कैन वी ड्रॉ ए पाई चार्ट करे कोन एवं आमे केमिति पाई चार्ट ड्रॉ बा अंकन करिताउ तार आंसर होची कोन ना व्हेन डाटा आर डिस्प्लेड इन ए सर्कल इट इज कॉल्ड पाई चार्ट और पाई डायग्राम कौन पाई डायग्राम का जेते गोटे सर्कल रे गोटे चार्ट पाई था बा सर्कल रे जेते डाटा गुडा डिस्प्ले होता है केमिति ना एमती रही था तार चारि भाग रे विभक्त होइछि गोटे ग्राफ गोटे सर्कल तेणु एठी ए बी सी डी दिया जाई था याकू कह जाई था कोन ना पाई चार्ट बोली कहा जाए The center point of the circle is considered to be the focal point because the angle at the center of the circle is 360 degree. So the scale of the diagram is taken in angles and due to this reason it is also called angular diagram. This type of a diagram is used to display a whole number in its different parts. The different parts of the circle can be filled with different types of lines or color to make it attractive and clear. For example, the result of class X of a school is as follows. First division 20%, second division 56%, third division 20% and failures 4%. Display this result by a pie chart or pie diagram. केमिति करिवो ना मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन तेणु जेहेतु आमे गोटे वृत्त नहींचे वृत्तटा होची केते ना टोटल होची वृत्तर 360 डिग्री तेणु आमर परसेंटेज जो बाहर करवा परसेंटेज अनुसार कले ना 360 डिग्री इज इक्वाल टू 100% ताले कौन करवा ना 100% इज इक्वाल टू 360 डिग्री बुझेला 1% केते हो ना 360 डिग्री बाय 100 बुझिपाल पिला माने तापर कौन ना फास्ट डिवीजन आमर पाई 20% ताहले केमति करवा ना 360 बाय 100 इंटू 20 तामाने हेबो केते ना 360 बाय 5 इज इक्वल टू 72 डिग्री तामाने फास्ट डिवीजन आमे जो कौन करवा जो सर्कलटा आमे करिचे से सर्कल रो गोटे पार्ट बा फास्ट डिवीजन हबो केते ना 72 डिग्री तापर देखिबा
जे 56% सेकेंड डिवीजन पाई 56% केमी हम ना सेमती 360 by 100 into 56 इज इक्वाल टू 18/5 into 56 डिग्री से तार भैल्यू है के 201.6 डिग्री तापर थर्ड डिवीजन पाई के ना पुणी 20% हेल्ले पुणी है 72 डिग्री तापर 4% हेल्ले फेल्युअर से के ना 14.4 डिग्री तेणु गोटे परसेंट हूँ के पे भल भाव यहाँ बुझ गोटे परसेंट हूँ 360 डिग्री by 100 एमती कर ना कैलकुलेसन कर 3.6 डिग्री हम तेणु गोटे परसेंट जो हूँ 3.6 डिग्री ताले 4% के हम तो कैलकुलेसन कर तेणु केते हूँ ना 4% बा फेल्युअर पिला जो 4% रही है तार हूँ 360 डिग्री 360 by 100 into 4 डिग्री इज इक्वाल टू 360 by 25 को है ना A4 को 100 काटले ये 25 इज इक्वाल टू के ना 14.4 डिग्री तेणु आम चारिटा जाक ग्रुप जो आम ये डिवीजन आम पाइचे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फेल्युअर चारिटा जाक ग्रुप आम कौन पाइबा डिग्री पाईगले 72 डिग्री 201.6 डिग्री 72 डिग्री एंड 14.4 डिग्री तापर कौन कर ना गोटे कौन कर गोटे वृत्त अंकन कर बुझीपार पिला माने गोटे वृत्त भल भाव अंकन कर मझीटा को आम चिन्हट कर तुम जो प्रोटेक्टर रही प्रोटेक्टर मझी को रखिकी मझी बिंदु ए बिंदु को मिलैकी सीधा भाव में रखिला ये जो गार गोटाए गार आमको प्रथम नवाक पड़ो गोटाए डिवीजन आमको नवाक पड़ो तारी उपर प्रोटेक्टर रखिकी आमर जो प्रथम बाहरी आमर केते ना फर्स्ट डिवीजन है केते ना 72 डिग्री 72 डिग्री जदि ये प्रोटेक्टर रखिकी पे भल भाव देख ये प्रोटेक्टर रखी तार जो सीधा गार रही है सीधा रखा एवं यही पटरू गणी गणिका जा 72 डिग्री कौट हो जेहेतु एटा हूँ 90 डिग्री होता है ताले धरा जाऊ ये 72 डिग्री बुझीपार पे ताहले यहाँ है के ना फास्ट डिवीजन बा ए आम कर लिखिपर फास्ट डिवीजन बुझीपार पे तेणु ये जो ग्रुप भागटा रहा सर्कल ये जो भागटा रहा आपको आम कलर मध्यम पॉइंट आउट कर कौन कर विभिन्न चिन्ह द्वारा आम संकेत द्वारा रिप्रेजेंट कर सूचई पार ये है 72 डिग्री बा फास्ट डिवीजन पिला तापर कौन करवा ये जो लाइनटा आम पाइले यही लाइन उपर पुणी प्रोटेक्टर पकई पुणी यही पटू आम देखा जे सेकेंड डिवीजन केते पाइछन ना सेकेंड डिवीजन पाइले जे 201.6 डिग्री यही जो पॉइंट आम पाइले पिला माने बुझ यू आम देखिले प्रथम नहीं गले धरा जाऊ ये फास्ट डिवीजन तापर ये प्रोटेक्टर पकई यही लाइन संगे मिसेब पुणी यही पटू देखिए जे 201.6 डिग्री कौटी हो धरा जाऊ ये आसला 201.6 डिग्री हो प्रोटेक्टर पकई ये पॉइंट आउट कर ये कौन कर टच कर जो बेस लाइन बा सेंटर को कौन कर ना गारटा टाणीदेव तेणु यहाँ है के ना सेकेंड डिवीजन तेणु आपको विभिन्न सेट द्वारा बा सेप द्वारा बा जहाँ गोटे जेकोसी संकेत द्वारा आपको कौन कर रिप्रेजेंट कर यहाँ है फास्ट डिवीजन यहाँ है सेकेंड डिवीजन तापर थर्ड डिवीजन केते रही ना थर्ड डिवीजन पिला होती 72 डिग्री पुणी 70 डिग्री कले ये प्रोटेक्टर पकई ये सीधारे यही प्रोटेक्टर गार को ये मिलेब एवं कौन कर यही पटे गणी चलो जे 72 डिग्री कौट हो धरा जाऊ ये है 72 डिग्री पुणी ये गार टाण यहाँ है के रिप्रेजेंट कर दर्शेब कौन दिस इज थर्ड डिवीजन तेणु यही को शून शून मध्यम जेकोसी गोटे प्रकार चित्र करके आम रिप्रेजेंट कर विभिन्न प्रकार कलर दे पार तापर आउ रहा 4% होती कौन ना फेल्युअर परसेंटेज के ना 14.4 डिग्री पुणी प्रोटेक्टर कौट पक ना ये पकेब एमती प्रोटेक्टर ये पकईकि तार लाइन को ठीक भाव रखिकी यू देखिए केते होची ना 14.4 डिग्री कौटी हो तेणु ये गुटिक निश्चय हम 14.4 डिग्री बुझिपारे पिला माने यहाँ है के ना फेल्युअर पिला तेणु पाई चार्ट को यही भाव में करा जाए तापर दी पाई चार्ट और पाई डायग्राम इज वेरी यूजफुल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रिलेटिंग टू द बजेट ऑफ द गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट हेड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन फैक्ट्स
teaching of various school subjects like mathematics, geography, geography, geometry and the like. It is used when we desire to picture proportions of the total in a striking way. We may measure the number of degrees by eye, but a more accurate measurement of a degree can be done with the help of a प्रोटेक्टर. जो प्रोटेक्टर द्वारा रखिकी आम तार डिग्री को आक्यूरेट डिग्री बा मेजरमेंट करी पारिबा. तेणु जेतेबेले डायग्रामटा आम करदे गोटे वृत्त करिकी बा गोटे सर्कल करिकी ताको आम डिविजन कर दौचे कौन जितेटा ग्रुप आमको दि जाए आम सेतेटा भागरे ग्रुप रे डिवाइड कर दौचे. एटा हला फर्स्ट डिवीजन, एटा हला सेकंड डिवीजन, एटा थर्ड एवं एटा होची फेल पिला. तेणु आको आम कौन करिया प्लॉटिंग करि परिबा विभिन्न शेड द्वारा बा विभिन्न कलर द्वारा मध्य प्लॉटिंग करि परिबा. तेणु आई कैचिंग हबो विभिन्न कलर करदेले बा विभिन्न शेड साइज करदेले आम जानी परिबा. तेणु से एई पिक्चर ही आम जानी परिबा जे पिला मानकर कौन सब दिया जाइछे एवं को पिला केते परसेंटेज रखिचंदी. ताहले पिला माने दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 1. तेणु वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखिबो एवं जोठी प्रॉब्लम किसी रहिला मते कमेंट माध्यम रे जणैबो. पिला माने मते देइथिले कमेंट रे जे इंग्लिश मीडियम रे करिया पई. तेणु सेहि मानक पई एजी वीडियो टी प्रस्तुत करा जायछि. वीडियो को भलो भाबरे देखिबो एवं सांग मानक पाखु शेयर करिवो. थैंक यू ऑल.